The story of Amba Shakti started in 1974 with its first plant in Muzaffarnagar, Uttar Pradesh. In no time, the company spread its wings and set up plants in Goa, Kala Amb, Himachal, and Gwalior, Madhya Pradesh. Amba Shakti has always been committed for the best quality products. After having a legacy of 48 years, with the setup of its latest plant in Sikandrabad, Uttar Pradesh, the group now boasts of an annual production capacity of more than 1 million tons and stands tall among the best. This is the largest and 100% eco-friendly plant in northern India. Our integrated plant, incorporating state-of-the-art infrastructure and technology, we produce the highest quality rebars without compromising on stringent quality controls. Our strong belief and commitment to a sustainable future and a better world is emphasized by a world-class pollution control system and zero usage of fossil fuels. Featuring a world-class 500,000 ton per annum rolling mill that is second to none, and a steel melting shop that employs the world-class technology available throughout the world, which combined gives the best rebar. Pollution processing unit recaptures 98% of the fumes emitted. In addition, reduces dust emissions by up to 40%, which ensures our commitment for a greener earth. The finest steel has to go through the hottest fire. We always believe in revolutionary and innovative decisions. We use the latest technology, which are second to none. Horizontal, vertical technology gives perfect and uniform ribs and exactly same girth at any point or length of our TNT bars, and also ensures constant diameter, constant weight, and higher grades. Its specialized high-speed steel rolls give better finish, enabling the rebar. Good morning, everyone. We are about to start. Within 5 minutes, I request all the exhibitors to please come inside and get settled down. So welcome to Day 2 STEELEX 2023. We are about to start in 2 minutes. I request all our exhibitors to please come and get settled down. All our exhibitors, delegates, please come and get settled down as we are about to start the Day 2 for STEELEX 2023.
The story of Amba Shakti started in 1974 with its first plant in Muzaffarnagar, Uttar Pradesh. In no time, the company spread its wings and set up plants in Goa, Kala Amb, Himachal, and Gwalior, Madhya Pradesh. Amba Shakti has always been committed for the best quality products. After having a legacy of 48 years, with a setup of its latest plant in Sikandrabad, Uttar Pradesh, the group now boasts of an annual production capacity of more than 1 million tons and stands tall among the best. This is the largest and 100% eco-friendly plant in northern India. Our integrated plant, incorporating state-of-the-art infrastructure and technology, we produce the highest quality rebars without compromising on stringent quality controls. Our strong belief and commitment to a sustainable future and a better world is emphasized by a world-class pollution control system and zero usage of fossil fuels. Featuring a world-class 500,000 ton per annum rolling mill that is second to none, and a steel melting shop that employs the world-class technology available throughout the world, which combined gives the best rebar. Pollution processing unit recaptures 98% of the fumes emitted. In addition, reduces dust emissions by up to 40%, which ensures our commitment for cleaner earth. The finest steel has to go through the grades. Its specialized high-speed steel rolls give better finish, enabling the rebar corrosion resistant. This makes Amba Shakti SD TNT the best companion for any kind of construction and achieves the highest compliance rates. Ultra-modern electric furnace allows us to control the chemistry better, and direct charging helps the core properties of steel to be retained. We use only the best steel to make graded unmatched products. Automated bar handling provides even bundles every time, and the latest bundling machines allow us to offer a single bundle of up to 4 tons for our esteemed commercial clients. These heavyweight bundles reduce the chances of getting stolen in transit. It is impossible to pull out bars from these sealed bundles, as once the seal is broken, it cannot be rejoined. You get exactly what you pay for. True value for your money. We have a pan-India presence. Functional. Good morning, everyone. Welcome to Day-2 STEELEX 2023. I request all our delegates to please come inside and get settled down as we are about to start. I request all our delegates to please come inside and get settled down. We will start in the next 2 minutes. I request all our delegates to please come inside and get settled down.
It's time to get started, and all of you, I request all our delegates to please come inside and get settled down so that we can proceed with our day 2. The story of Amba Shakti started in 1974 with its first plant in Muzaffarnagar, Uttar Pradesh. In no time, the company spread its wings and set up plants in Goa, Kala Amb, Himachal, and Gwalior, Madhya Pradesh. Amba Shakti has always been committed for the best quality products. After having a legacy of 48 years, with the setup of its latest plant in Secunderabad, Uttar Pradesh, the group now boasts of an annual production capacity of more than 1 million tons and stands tall among the best. This is the largest and 100% eco-friendly plant in northern India. Our integrated plant, incorporating state-of-the-art infrastructure and technology, we produce the highest quality rebars without compromising on stringent quality controls. Our strong belief and commitment to a sustainable future and a better world
is emphasized by a world-class pollution control system and zero usage of fossil fuels. Featuring a world-class 500,000 ton per annum rolling mill that is second to none, and a steel melting shop that employs the world-class technology available throughout the world, which combined gives the best rebar. Pollution processing unit recaptures 98% of the fumes emitted. In addition, reduces dust emissions by up to 40%, which ensures our commitment for a greener earth. The finest steel has to go through the hottest fire. We always believe in revolutionary and innovative decisions. We use the latest technology, which are second to none. Horizontal vertical technology gives perfect and uniform ribs and exactly same girth at any point or length of our TNT bars, and also ensures constant diameter, constant weight and higher grades. Its specialized high-speed steel rolls give better finish, enabling the rebar corrosion resistant. This makes Amba Shakti SD TNT the best companion for any kind of construction and achieves the highest compliance rates. Ultra-modern electric furnace allows us to control the chemistry better. And Good morning, everyone. Welcome to Day-2 STEELEX 2023. I request all our delegates, exhibitors to please come inside the hall and get settled down because we are about to begin the Day-2 within 2 minutes. All the exhibitors and delegates, please come inside and get settled down. Good morning, everyone, and welcome to Day-2 STEELEX 2023. It's the last announcement. I request all the exhibitors and delegates to please come inside and get settled down as we are about to start now. I request all our exhibitors and delegates to please come inside and get settled down as we are about to start now.
Good morning, everyone, and welcome to STEELEX 2023 and 35th National Conference on Decarbonizing, Capacity Building, and New Entrepreneur Development in the Steel Sector in India. So day one was really intellectual. It was filled with a lot of intellectual sessions. Of course, the one-on-one meetings. We are expecting the same in day two. So let's begin the day two on a good note. So can we have a round of applause for, first of all, STEELEX 2023 and for IFA for organizing this wonderful opportunity. Thank you so much. So to begin with, I would like to invite Mr. Yogesh Mandani. Can we have Mr. Yogesh Mandani on the stage, President IFA? A big round of applause for him. Along with him, I would like to invite our Honorable Secretary General IFA, Mr. Kamal Agarwal. Can we have a big round of applause for him? I also request Mr. Anil Goyal, VP, Kalika Steel, to please come on the stage and join them. Along with him, I would like to invite Mr. K.K. Garg, North Zone Chairman, IFA. Mr. Dinesh Agrawal, West Zone Chairman, IFA. Mr. Ramesh Agrawal, Central Zone Chairman, IFA. I can't hear the applause as well. Only the right sides are just giving the applause. So let it be. And last but not the least, Keyur Shah from Mono Steel Gujarat, Chairman Regional. Can we have a big round of applause for him? And now it's time to invite our guest of honor for today. And let's have a big round of applause for Mr. Paramjeet Singh, Additional Industrial Advisor, Ministry of Steel. And I request Mr. Mandhani to please present this token of appreciation and respect to our guest of honor, Mr. Paramjeet Singh. Thank you so much, Mr. Singh, to be here with us today. And to begin with, I request Mr. Mandani to please come over for a welcome address. So, good morning to all. So, yesterday was a very big day for the IFA and all the members over here, delegates all across India. कल का दिन का मैं थोड़ा सा ब्रीफ आप सबको कर दूँ. कुछ लोग हैं जो आज आए हैं ड्यू टू सम हैवी रेन्स और कुछ ट्रैवलिंग इश्यूज़ की वजह से पहुंच नहीं पाए थे. और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वेलकम करता हूँ हमारे मोस्ट नियर एंड डियर इन स्टील मिनिस्ट्री, और एडवाइज़र, इंडस्ट्री एडवाइज़र परमजीत सिंह जी. इनके बारे में मैं बताता हूँ कि ये हमारे इंडस्ट्री के हर स्टेक होल्डर्स के साथ में 1-to-1 कनेक्टेड है, और कुछ भी अगर होता है तो हम डायरेक्ट फ़ोन करते हैं और इनसे हम सलाह मशवरा करते हैं. और ऑलवेज ही हैज़ बीन सपोर्ट हैंड फॉर ऑल द इश्यूज ऑफ स्टील. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग एंड कमिंग फॉर दिस वेलकम सेशन. कल का जो दिन था, हम कल के दिन में सारी जो वेलकम इनॉग्रल फंक्शन था उसमें हम लोगों ने हमारे मिनिस्टर साहब, MOS स्टील मिनिस्ट्री, और हमारे सेक्रेटरी साहब और एडिशनल सेक्रेटरी, UNDP के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इनको हमने सब सुना. और हमने ये पाया कि सारी स्टील मिनिस्ट्री और उससे एसोसिएटेड जो भी संस्थाएं हैं वो हमारे सेक्टर को लेके काफ़ी सहनशील है, और वो चाहते हैं कि ये सेक्टर इंडिया का जो टारगेट है 300 मिलियन टन का, इसमें कंट्रीब्यूट करे, और उसके लिए वो सारा सपोर्ट सिस्टम देना चाहते हैं.
और हमने उसके बाद जो सेशंस लिए थे जिसमें हमने ये रखा था कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हो, सेमी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में वी शुड ऑल्सो बी गिवन अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, जहाँ पर हमारा भी स्टील, जो जिसको सेकेंडरी स्टील कहा जाता है या जिसको रिसाइकलिंग स्टील कहा जाता है या जिसको स्क्रैप बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है, ऐसे स्टील को भी एक कंपलसरी वे में 20%, 30% तक का उसमें यूज़ करने के लिए कंपल्शन किया जाए, ताकि उनके भी बैलेंस शीट्स और उनके रिकॉर्ड से वो जस्टिफाई हो कि यस दे आर डूइंग इट। सिर्फ बातों से या कहने से नहीं, उसको सही में अमल में लाने के लिए ऐसे कुछ स्टेंजेंट एक्शन प्लान बनाने पड़ेंगे, ऐसे कुछ डाटाबेस रिकॉर्ड तैयार करने पड़ेंगे और वो दिखने चाहिए, और ना दिखे तो उसके ऊपर उनको यूज़ करने के लिए वापस फिर से प्रेशराइज किया जाना चाहिए। ऐसी हमारी कल मिनिस्ट्री के साथ में और बाकी जो पैनल्स में सारा जो पहला पैनल था उसमें ये डिस्कशन हुआ। तो निष्कर्ष इसका ये है कि अगर हमारा स्क्रैप, अगर जो हमारे अलावा जो प्राइमरी प्रोड्यूसर जिसको कहा जाता है, जब उनको अगर कंपल्शन किया जा रहा है फॉर एनवायरनमेंट से कि आप 20%, 30% स्क्रैप यूज़ कीजिए आपके ब्लास्ट फर्नेस में या व्हाटएवर आपका जो प्रोसेस है उसमें स्क्रैप यूज़ करिए, जब हमारा रॉ मटेरियल वो यूज़ कर सकते हैं तो फिर हमको भी हमारे फिनिश के लिए हमको जो स्पेस चाहिए वो चाहिए। नो डाउट इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बूमिंग है और उनका भी, प्राइमरी सेक्टर का भी योगदान बहुत बड़ा रहने वाला है फॉर द सपोर्ट ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। इक्विवेलेंटली हम लोगों का भी कंट्रीब्यूशन उसमें है और वो हम, जायज़ सी बात है, हम वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारा ये होना चाहिए। मैं इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि परमजीत सर भी है और बाकी भी हमारे डेलीगेट्स हैं और मीडिया पार्टनर्स भी है, ये मैसेज थोड़ा लाउड हो जाए और ये पहुँचे, सब तक पहुँचे, सब लोगों तक पहुँचे। इसके बाद का जो हमारा सेशन हुआ था जिसके अंदर हमने बात की थी पॉलिसी फ्रेमवर्क की, उसके बाद हमने ग्रीन फाइनेंस के बारे में बात की थी। तो ग्रीन फाइनेंस में जो हमने डिस्कस किया कि हमारे इंडस्ट्रीज़ को आने वाला जो समय है वो ग्रीन स्टील प्रोड्यूस करना है, रिसाइकलिंग स्टील से हमको फिनिश प्रोडक्ट तैयार करना है। ये सब चीज़ों के लिए जो भी नॉर्म्स आ रहे हैं वो नॉर्म्स को अगर अचीव करना है और वर्ल्ड के नॉर्म्स के हिसाब से यूरोपियन स्टैंडर्ड और बाकी जो स्टैंडर्ड्स है फॉर एनवायरनमेंट और ग्रीन स्टील बनाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए हम लोगों को इसमें काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और नई नई टेक्नोलॉजी और वैल्यू एडेड चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज की हमने कल बात की, कल फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर सारा पैनल था जिसमें हमने रेटिंग से लेके तो लिस्टिंग कैसे की जा सकती है और फाइनेंस बैंकर्स कैसे अवेलेबल करके दे सकते हैं, इसके बारे में बात की थी। हमारी सक्सेस जो है सेकेंडरी स्टील की, ये बहुत कम मार्जिन्स पे होती है। हमारा बिजनेस जो होता है ये सारा बहुत कम मार्जिन्स पे होता है, वॉल्यूम बड़ा होता है। इसके अंदर हम लोगों को कौन सी चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए ताकि हमारी फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनी रहे, ये सब चीज़ों पे हमने कल डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने पॉलिसी फ्रेमवर्क पे डिस्कस किया था जिसमें कि भाई हम लोग चाहते हैं कि अगर कोई स्टेट के पास इंडस्ट्री लगाने के लिए अच्छी पॉलिसी है और वो हमारे हित में है, तो क्यों नहीं बाकी स्टेट भी वो चीज़ों को अडॉप्ट करे और उस टाइप की पॉलिसीज़ वो स्टेट में भी अवेलेबल हो। इसके लिए हमने एक नो हाउ के तौर पे हमने महाराष्ट्र से और बाकी स्टेट से जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के जो स्टेक होल्डर, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के जो ये होते हैं ऑफिसर्स होते हैं, उनको हमने बुलाया था, उनके साथ हमने इंटरेक्शन किया। इस इंटरेक्शन के माध्यम से हमको ये पता चला कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। ये सब सारी चीज़ें समझने के बाद हम लोग ये चाहते हैं कि आप आपके स्टेट में इस टाइप की पॉलिसी को लाने के लिए कोशिश करिए। उसके लिए जो भी डाटा लगता है हम उस स्टेट से बुलवाएंगे, दोनों स्टेट के ऑफिस नोडल ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करेंगे और ये सब करके हम चाहेंगे कि हमारा स्टेट, जो आपका स्टेट है, वो भी प्रॉस्पर हो और हमारी प्रॉस्पेरिटी उसमें हो। उसके बाद हमने जो सेशन लिया था डीकार्बनाइजेशन के ऊपर हमने डिस्कस किया था। ये सारी कल की डिस्कशन हो चुकी है और इसमें से जो भी आउटकम है, सबसे अच्छी बात है कि मिनिस्ट्री ने इसका
पूरा रिपोर्ट बनाने का ये किया है और उनके हर सेशंस के अंदर मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स और अधिकारी जो थे वो उसमें प्रेजेंट थे और उन्होंने इसको आगे लेके जाने की हमसे प्रॉमिस किया है। नाउ आज का जो दिन है, आई नो दैट कि कल हमने रात में एक प्रेसिडेंशियल डिनर भी रखा था जिसमें काफ़ी हमारे सारे डेलीगेट्स आए थे और उन सब ने अपने अपने मन की बात भी उसमें की थी। तो थोड़े से मेंबर्स अभी लेट पहुंच रहे हैं, बट सर हमारे सारे मेंबर्स ऑन द वे है और वो बहुत जल्दी यहाँ पहुंचेंगे। इसके बाद सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के जो दिन है, आज हमारा सबसे बड़ा जो हमारा सब इशू है जीएसटी, इसके ऊपर हम लोग आज चिंतन करने वाले हैं और इस चिंतन के बाद, इस पैनल के बाद हम एक प्रॉपर निष्कर्ष पे पहुंचेंगे और हमारी जो आगे की स्ट्रेटजी है उसको हम तय करेंगे। हमने उसमें बहुत सी चीज़ें डिसाइड की थी, मैं उस सेशन के बाद आप सब लोगों के साथ में 1-to-1 उसमें बताऊंगा कि हम लोग आगे कैसे इसको लेके जाना चाह रहे हैं। जीएसटी का इशू सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे अस्तित्व का सवाल है। नंबर 2 सर, इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो रही है कि हमारा जो स्क्रैप है, अब ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी इसको यूज़ कर ही रहे हैं और अभी बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, तो इसमें हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है कि प्राइसिंग का भी और हमारे जो फिनिश प्रोडक्ट है उसकी भी प्राइसिंग का। तो हमने आज एक सेशन उस पर भी रखा है कि हाउ द प्राइसिंग शुड बी, और जो ये हमारे इसमें थोड़े न्यूएसेंस होते हैं कि एसएमएस के बेस पे मार्केट को ऊपर नीचे किया जाता है, मार्केट के सेंटिमेंट को ख़राब किया जाता है, जबकि वो फैक्ट होता नहीं है। बट ये जो सोशल मीडिया और ये जो एसएमएस वाला जो व्हाट्सएप मैसेजेस का जो इशू है, इसको हम कैसे स्ट्रेंथन करें तो ऑन द ना हो, उनको ये पता रहे कि अगर कोई फेक मैसेज भी आ रहे हैं तो वो इमीडिएटली उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं अपना ऐप खोल के, आईफा का ऐप खोल के, और उसमें वो चेक कर सकते हैं कि क्या उसमें हो रहा है। इसके विपरीत हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ एक 4-5 लोगों का टीम बनाया जाए और वो ऑल द टाइम फ़ोन पे अवेलेबल हो, जिसमें कोई भी रेट की अगर कोई बात होती है, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, फिनिश का हो या कोई और प्रोडक्ट्स का हो जो हमको लगते हैं स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो सारे प्रोडक्ट्स का एक प्रॉपर रेट क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए और क्या एट प्रेजेंट है रीजनल वाइज, इसको हम प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम लोग चाहेंगे कि हमारे जो आज के गेस्ट हैं, हमारे इंडस्ट्री के एडवाइज़र फॉर स्टील मिनिस्ट्री श्री परमजीत जी, वो हमको मार्गदर्शन करे और हमारे की स्ट्रेंथ और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए अपनी बात रखे। सो आई वेलकम वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। और हमारे कुछ मेरी आवाज़ अगर बाहर तक जा रही है तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर्स हु आर ऑन द एग्जिबिट, सारे सेशंस जो होने वाले हैं वो बहुत अच्छे से होने वाले हैं। सो प्लीज़ आज बी अटेंटिव और हमारी वॉइस ऑफ सेकेंडरी स्टील अगेन फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ आई। सब कल के थके हुए भी होंगे, पर मैं ये देख रहा हूँ क्या बड़े उत्साह से आप लोग आए हुए हैं और उसके लिए आपका स्वागत है। आज का मैं कहूँगा कि हमारे बीच में पंजाब के 2-4 मिनट अपनी कोई बात हमारे को कहना चाहते हैं तो कहें। आप माइक ले लें, आपके सामने पर। सॉरी, मैंने जो यहाँ पर हमारे गेस्ट बैठे हैं मैंने उनका इंट्रोडक्शन प्रॉपरली दिया नहीं। तो हमारे साथ में मोनो स्टील से केयूरी भाई शाह है जो कि हमारे के, और ये लुधियाना पंजाब से है और ये हमारे एसोसिएशन के नॉर्थ जोन के चेयरमैन हैं। इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा, ये पहले प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं आईफा को लाने में इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। साथ में हमारे वाइस प्रेसिडेंट है आईफा के जो कि अनिल जी गोयल है कालिका स्टील से। इनका हमेशा हमको सपोर्ट रहा है और हर इवेंट में, हर प्रोग्राम में ये हमारे लिए स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, क्या कैसे प्रोग्राम होना चाहिए, इसके ऊपर हमेशा हमको गाइड करते हैं। और ये जालना के एक अच्छे स्टील मैन्युफैक्चरर है, इनका ब्रांड नेम कालिका स्टील है, काफ़ी सेंट्रल इंडिया में काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है ये। और हमारे साथ में हमारे सबके प्रिय हमारे ऑल टाइम जनरल सेक्रेटरी कमल जी अग्रवाल,
तो इनका इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना ही कि कमल अग्रवाल, दैट्स इट। हमने कभी कमल जी या कमल कुमार जी ऐसे बोलने की कोशिश भी करते हैं तो बोले अरे वो तो मेरी आइडेंटिटी हट जाएंगी, आई एम ओनली कमल अग्रवाल। तो ऑल टाइम वेरी एनर्जेटिक कमल जी के बारे में। कमल जी हमेशा सेकेंडरी स्टील को लेके बहुत सेंसिटिव है, और ये मुझे लगता है कि शायद ऐसा 24 घंटे में ऐसा एक भी मिनट नहीं होगा कि जो ये अपने बेटरमेंट के लिए नहीं सोचते। तो रियली थैंक यू कि आईफा को ऐसा हीरा मिला है, तो थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूँगा कि हमारे जो गेस्ट है वो अपनी अगर बात रखना चाहते हैं आप लोगों के सामने, और अपनी जो भी बात रखी जा रही है, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि ये मीडिया के माध्यम से ये मिनिस्ट्री तक और अपने सारे बाकी जो मेंबर्स हैं देश के, वो उन तक ये पहुँच रही है बात। तो प्लीज़ आप जो भी बात करें बिल्कुल सही और अपने सटीक बात करें, ताकि हम लोग ये सही मैसेज हमारा पहुंचा सके। हमारी वॉइस ऑफ सेकेंडरी स्टील को स्ट्रांग करने का काम हम सब लोगों का है। प्लीज़ साहब। धन्यवाद प्रधान जी और मेरे आए दोस्तों। मैं लुधियाना से हूँ। सब यहाँ बात सारी हो रही है टीएमटी स्ट्रक्चर इन सब मटेरियल की बात हो रही है, पर हमारी जो लुधियाना में इंडस्ट्री है वो ओनली इंडस्ट्रियल मटेरियल बनाती है। आज की डेट में मोटरसाइकिल पार्ट्स है, सब जगह इंडस्ट्रियल में इंडक्शन फर्नेस का माल यूज़ होता है। तो अपने को ये भी सोचना चाहिए भी हम इस और भी बढ़ें, क्योंकि हमारा ये लुधियाना की जितनी भी इंडस्ट्री है वो सारी इंडक्शन बेस्ड जो इंडस्ट्री है, सारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाती है, चाहे वो फ्लैट है, चाहे हैंड टूल है, जितना भी मटेरियल बनता है वो सारा इंडक्शन रूट से बनता है, और सारा हैंड टूल और जितना मटेरियल बनता है सारा बहुत बढ़िया मटेरियल बनता है। और सारी हमारी इंडस्ट्री ग्रीन इंडस्ट्री है, कोई स्मोक नहीं है क्या हमारी इंडस्ट्री में, और जितना भी कार्बन एमिशन है उसको हम कंट्रोल करके रखते हैं। और हम आईफा के माध्यम से ये भी चाहेंगे कि इस इंडस्ट्री को भी हमने को प्रमोट करना चाहिए, ताकि हम इस इंडस्ट्री को आगे ले जा सकें। हमारा फ्यूचर भी इस लोगों से बहुत बाध्य है। इंडक्शन फर्नेस में कास्टिंग यूनिट लगे हैं 500 किलो की, 800 किलो की, 1 टन की, 2 टन है, उसमें हमको कुछ नाम तो हमको देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने एक सजेशन बॉक्स रखा है जिसमें हमने रिक्वेस्ट की है कि हमारे सारे डेलीगेट्स से, विजिटर्स से भी, कि हमारे सेकेंडरी के लिए हमारा जो सेक्टर है जो हिसाब से काम कर रहा है उसके हिसाब से कोई एक नाम सजेस्ट करे, और जो भी नाम अच्छे से अच्छा उसमें से आउटकम निकलेगा हम लोग वो मिनिस्ट्री के साथ शेयर करेंगे। और वंस वो फाइनल होता है, जिसका भी वो सजेशन रहेगा उसको बिल्कुल आईफा एक अवार्ड देंगी। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग अपना अपना सजेशन इसमें बिल्कुल बॉक्स में दीजिए अपने नाम के साथ में। थैंक यू। कमल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात रखे। बाकी जो मैं अपनी बात जीएसटी को लेके ज़्यादा हूँ, और जीएसटी की बात अभी हम आने वाले सेशन में पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि हर सदस्य जो कल से आए हुए हैं 500-600 लोग, वो यही मेरे को कह रहे हैं कि जीएसटी की हम लड़ाई करनी है। वो हमारा इस सेशन से, इस इवेंट का उद्देश्य है। जीएसटी को लेके हम पूरी लड़ाई करेंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी भी स्तर पर सुप्रीम कोर्ट भी जाना। ये मैं आपको आश्वासन नहीं, पूरा आप लोगों के सहयोग से सब होगा। परंतु आज के मैं प्रधान जी आपकी आज्ञा से मैं अपने अशोक गर्ग जी हैं, हमारे कोषाध्यक्ष भी हैं, जिनके बिना, कुबेर जी के बिना कोई कार्यवाही होती नहीं है, और वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी है। उनको मैं सबको परिचय बताना चाहता हूँ, सब जानते भी होंगे। वो हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के साथ चलते हैं। उनके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। चाहूँगा क्या सभा एक बारी हाथ दिला के उनको ताली बजा के उनको धन्यवाद। आज कई लोग हमारे बीच में नए आए हैं, बोलना भी चाहते हैं। जैसे पंजाब से महेंद्र गुप्ता जी भी आए हैं। मैंने इनको कहा आप अपने जीएसटी के सेशन में बोलिए। ये भी हमारे पंजाब को जोड़ने में बहुत सहयोग दे रहे हैं। अशोक सुराना जी जो रायपुर को लेके सारे उनको जोड़ा है, ये शुरू से हमारे इस समय पैटर्न है और बहुत कार्यशील रहते हैं। बाकी सभी का सहयोग हमें मिलता रहता है, इसके लिए मैं सभी को वो कहता हूँ। तो इस समय हम मेरा ख्याल सो आई रिक्वेस्ट
हमारे इंडस्ट्री के एडवाइज़र स्टील मिनिस्ट्री से श्री परमजीत जी से कि वो अपनी बात रखे और हम लोगों का मनोबल बढ़ाए. प्लीज़ परमजीत जी. Good morning to all of you. It's my privilege to be here to address this conference, which is basically on decarbonization, capacity building, and new entrepreneur development. I think the name, the topic, what has been chosen by IFA, it is like that we are going to revive the sector now. We are thinking that we have to revive the sector now. As IFA is there, according to the data from the JPC, at present, around 887 induction furnaces are there, which has the total capacity of around 57 million tons. And the production is 40 million tons, which comes around 70% of the utilization. I think there is scope of further increase of utilization, which can help the industry to improve their efficiency and other parameters. Yesterday, it was mentioned that this sector is going to have a, you can say, large capacity and going to contribute huge by 2030. But ministry doesn't have any data right now कि how much capacity will come from this sector. तो मेरी request रहेगी मंदानी जी से कि that I think JPC is collecting the data. They are submitting that data to the ministry, and based on data, we are, you can say, giving the information to the government wherever it is required, and even the industry is utilizing that data. My request would be to Mr. Yogesh Mandani ji that let us collect the data, whatever the capacity is going to come, what capacity they are going to come, what facilities they are going to bring, whether they are coming with the latest facilities, best available practices or not, that should be available with the ministry, because that will help that how much sector is going to contribute. You told yesterday that 55% will be there out of 300 million tons. So that data must come to the ministry. Regarding the decarbonization, I think there are 5 pillars. What we have, you can say, analyzed in the ministry. First pillar is the energy efficiency, where we can focus first, which has the capacity that we can reduce the emission from 15 to 20%. And another pillar is resource efficiency. Third is material efficiency. Fourth is the process transition. Fifth pillar, what we are thinking of is that the deep carbonization. Based on that, I will again request to Yogesh Mandani ji that just make a short-term, medium-term, and long-term plan how the sector is going to contribute to reduce the emission. What is their short-term plan? Short-term plan means by 2030, as Secretary Steel told that yesterday, that we have to come down to the emission level of 2.1 ton per ton of the crude steel. So we need to analyze what is the contribution by the sector and how the sector will come within the short term, how they are going to contribute to 2.1. That if some analysis can be reported to the ministry, that will help us to, you can say, focus and to help the sector. Another area I think which is lot being talked today, or it is that circular economy and how the sector is playing in, you can say, play the role in circular economy. That can also be elaborated by the IFA. And whatever the problems actually sector is facing,
In the past, I think, Ministry of Environment and Forest, now that there is an extension of 6 months, I think, by till January 2024, it has been extended. So whatever the problem is being, you can say, being faced by the sector, whenever you will come, we will try to resolve the problems at our maximum capacity. But at the same time, industry has to come forward to, you can say, to meet the targets, whatever the commitment is made by our Honorable Prime Minister in COP27 to reduce the emission. With these words, I close my speech. Thank you very much for. And now I request Mr. Mandhani to please present this token of respect to our guest of honor, Mr. Paramjeet Singh. Before that, Mr. Mandhani has few words to share with us. Hello. So thank you परम जी. जैसा कि आपने कहा कि डाटा, सर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हम लोगों ने जो विजिट्स किए बिफोर दिस प्रोग्राम, हम लोगों ने 6 से 7 जगह पे विज़िट की थी. वी स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई, देन इट वाज रायपुर, हैदराबाद, देन वी केम टू जयपुर इन राजस्थान, एंड देन टू अहमदाबाद, लुधियाना, मंडी गोविंदगढ़ accordingly. So the thing what has been brought to our notice in our visit was there are many industries, induction furnace, rolling mill, or producing the steel, which are yet not been known to the associations and to the ministry also. So you rightly said that we need to have a collective data on the basis of which we can analyze ki how much is the production done by this sector, rolling mill, induction furnace, DRI making, and other steel making. So there is a stainless steel, alloy steel. There are a lot of people, but they are not in touch with any association, not in touch with the ministry. So I really assure you that we will be taking this task of collecting the data from all over Pan-India, and we will be submitting a report on this. I firmly believe that really the capacity what we produce is more than what the data today prevailing we have. So ये काम हम सब करेंगे, और इसमें मैं चाहता हूँ कि the various जो रीजनल एसोसिएशंस है वो सब लोग इसमें कंट्रीब्यूट करें, उसमें वो डाटा हमको दिलाने में, और हमारे टीम को उसमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम एक प्रॉपर डाटा, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द डाटा. हमारी वॉइस जो है वो हमारे डाटा पे है. हम लोग वेग बात नहीं कर सकते कि हमको ये बताना पड़ेगा कि हम लोग इस सेक्टर में कितना प्रोडक्शन लेते हैं, हमारा एम्प्लॉयमेंट कितना है, हम रेवेन्यू कितना दे रहे हैं. ये सारी फिगर अगर हम कलेक्टिवली हमको मिलती है तो हमारी वॉइस को बहुत स्ट्रॉन्ग स्वरूप मिलेगा और हम हमारी बात को प्रॉपर वे से रख पाएंगे. सो ऑन अ सीरियस नोट वी विल सी दैट कि विद इन अ मंथ हम लोग इसका पूरा एक रिपोर्ट बनाएं, और हम लोग आपको ये आश्वास करते हैं कि इस रिपोर्ट के बेस पे हम आगे की हमारी स्ट्रेटजी और हमारे बहुत सारे देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको महाराष्ट्र का. महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने हमको इतना सपोर्ट दिया है. हम लोग अगर कोई चीज़ रखते हैं और बोलते हैं कि ये R&D कर एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है, आप लोग आपके इंडस्ट्री एरिया में ये सब फैसिलिटीज़ तैयार कीजिए या कोई फंड रिजर्व कीजिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई फंड दीजिए. सो दे टेक द प्रोजेक्ट वेरी सीरियसली बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द इंडस्ट्री, और उसको वो इम्प्लीमेंट होता है. आई एश्योर कि अगर हम लोग ये डाटाबेस सब लेके हमारे मिनिस्ट्री में जाएंगे, हमारे गवर्नमेंट के पास जाएंगे, PMO में जाएंगे, तो मैं एश्योर करता हूँ कि हम लोग भी हमारे सेक्टर के लिए R&D से रिलेटेड, एनवायरनमेंट और पोल्यूशन से रिलेटेड बहुत सारा फंड, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हम कॉमन वे में खड़े कर पाएंगे. सो ऑन अ सीरियस नोट सर, हम लोग इसको सीरियसली लेंगे और हम आपको विद इन अ मंथ ये सारी रिपोर्ट हम आपको देंगे सर. थैंक यू.
कमल जी कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। डाटा देने में जो हमारी इंडस्ट्री घबराती है कि अभी डाटा, हमारा कहना यही है, जो सर का भी कहना है, वो सिर्फ हमें कैपेसिटी आपकी चाहिए कि कैपेसिटी इंस्टॉलमेंट कितनी है, प्रोडक्शन कितनी हो रही है, उस डाटा की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। वो हम मिनिस्ट्री से जैसे हमारी बात हुई थी, सेक्रेटरी साहब से भी, वो जीएसटी डिपार्टमेंट वगैरह इससे आ जाती है। हमें इंस्टॉल कैपेसिटी चाहिए आपकी कितनी है, पावर का कनेक्शन कितना है, जिससे क्या मिनिस्ट्री ये निकाल सके कि अभी कैपेसिटी इतनी है, इतने % यूज हो रही है और इसको कैसे बढ़ाया जाए और इनको क्या सुविधा दी जाए। क्यों सर? Yes, basically we need what is the capacity right now, because we जैसे कि मैंने बताया कि it is envisaged that कि by 2030 we are going to have a 300 million ton capacity, but we don't have the real data as your capacity. It is more than 57 million tons. Maybe the sector may be having a 60 million tons, but that data need to be reported. Based on that, you can say even the government can plan, government can, you can say, work on the policies, how we have to move further, how the sector has to be taken forward. I'd like to add one more thing, as KK Garg was saying that the sector has a capacity to produce the alloy steels, stainless steel or other grade of steels. Ministry of Steel has already imposed the quality control order, and 145 products are under the purview of quality control. We have formulated a technical committee just to check whether the imports are coming with BIS license or not. We have analyzed that around more than 1,000 grades are there which are being imported, which can be, as Secretary Sir told yesterday, that this sector can meet the niche requirements like whatever, alloy steel, stainless steel, or type of, you can say, products. Like sometimes the products are very thin in gauge, which cannot be produced by the bigger sector. This sector can play a role. I have, you can say, already at many floors, I have given opportunity to the sector. If you need the data, just come to us. We have already uploaded this data on our website. If you need the data further, what is the composition, what are the mechanical properties required by that, you can come forward to us, whatever you can produce in the country. Because as our Honorable Prime Minister has told, we have to become Atmanirbhar. I think this sector can play a role in Atmanirbharta. Tool and die steel, around 2 lakh tons of tool and die steel are being imported in the country. The requirement is, sometimes the requirement is around 30,000 tons, or for some grades the requirement is hardly, you can say, 500 tons. I think these type of requirements can be met by the sector. If sector will come forward, ministry is ready to, you can say, help, and PLI scheme is there. You can take the help of the PLI scheme to build the capacity to produce these type of grade. Thank you very much. Now I request Mr. Mandhani to please present this memento to our guest of honor, Mr. Paramjeet Singh. Thank you so much. And now it's time for the IFA Awards. And I request Mr. Paramjeet Singh to please do the honor. And let's call our awardees now. So Ispat Mitra Award 2023 goes to Mandi Govindgarh Induction Furnace Association. Can we have a big round of applause for them? I request them to please come on the stage to receive this award. Congratulations. The next in the same category is Chhattisgarh Steel Mini Plant Association. Can we have a big round of applause for Chhattisgarh Steel Mini Plant Association?
And I request the team to please come on the stage and accept this award. The next for Ispat Mitra Award 2022 to 2023 goes to Induction Furnaces Association of North India. Can we have a big round of applause for Induction Furnaces Association of North India? I can't hear the applause, that's morning. Do you want some tea, coffee? And I request the representatives to please come on the stage to accept the award. And the next for Ispat Mitra Award 2023 goes to Ludhiana Steel Re-Rollers Association. I request the representatives to please come on the stage and accept this award. Congratulations. It's time to announce the next Ispat Mitra Award 2023, and it goes to Rajasthan Steel Chamber. Can we have a big round of applause for Rajasthan Steel Chamber? Congratulations. So let's move on to the next one for Ispat Mitra Award 2023, and it goes to Steel Manufacturer Association of Maharashtra. Can we have a big round of applause for them? And I request their representative to please come on the stage and accept this award. Congratulations. So now let's move on to the next Ispat Award 2023 winner, and it goes to Steel Furnace Association of India. Can we have a big round of applause for Steel Furnaces Association of India? And I request their representative to please come on the stage and accept this award. The next for Ispat Mitra Award 2023 goes to the Indian Ferro Alloy Producers Association. Can we have a big round of applause for them? And I request the representative to please come on the stage. So let's move on to the next one, Ispat Mitra Award 2023, Furnace Allied and Industries Association, Ludhiana. Can we have a big round of applause for them? So let's move on to the next one. And the Ispat Mitra Award 2023 goes to Cold Rolled Steel Manufacturers Association. Can we have a big round of applause for them? The next is Sponge Iron Manufacturers Association, SIMA. A round of applause for them. For the next Ispat Award 2023, it goes to Furnace Alliance Ludhiana. Congratulations. And let's call our next awardee, Sihor Steel Re-Rolling Mills and Association. Congratulations to Sihor Steel Re-Rolling Mills Association. Now moving on to the next one, it goes to West Bengal Sponge Iron Manufacturers Association. Congratulations.
I'm repeating the awardee again, West Bengal Sponge Iron Manufacturers Association. Now let's call our next awardee, Indian Refractory Markers Association. Congratulations to Indian Refractory Markers Association. Congratulations to Indian Refractory Makers Association. And now moving on to the next awardee, Anand Prabhat Iron and Steel Association. Can we have a big round of applause for them? And now let's call our next awardee for his Path Mitra Award 2023. And can we have a big round of applause for IM Chapter Delhi? Can we have a big round of applause for our next Path Mitra Awardee 2023, IIM Delhi Chapter? The next Path Mitra Award 2023 goes to Himachal Pradesh Steel Industry. I'm repeating the name of the awardee once again. Himachal Pradesh Steel Industry Association. Congratulations. Now the stage, International Zinc Association India. Can we have a big round of applause for them? And the next awardee in this Path Mitra Awards 2023 is All India Steel Re-Rollers Association. And let's have a round of applause for Alloy Steel Producers Association of India, our next awardee for his Path Award 2023. Congratulations. Now move on to the next one. Is Path Mitra Award 2023. The next awardee is India-led Zinc Development Association. And the next we have Bhavnagar Induction Furnace Association. Can we have a round of applause for them? Applause please, gentlemen. Congratulations. And thank you so much, our honorable dignitaries, for joining us for this lovely session. Can we have a group picture?
And here there is one more award, and it goes to Mandi Govindgar, Induction Industry. Can we have a big round of applause? And now, steel sector. And let us call our panelists for this intellectual session. Dr. P.R. Swaroop, Director General CIDC. Can we have a round of applause for him? Along with him, I would like to introduce to our next panelist, Mr. Girish Sethi, Director TERI. Mr. Arinda Mukherjee, Associate Director Deloitte. Energy Efficiency and Renewable Energy, UNDP India. Mr. Ajit Chaturvedi, Director, Industry Limited. Mr. Vishwa Bandhu, Deputy Director, NISST. Mr. Vikas Varshnaya, Director, Megatherm. And last but not the least, Dr. G.L. Grover, Consultant. And let me introduce to our moderator, our session chair. So first, let us invite our moderator, Mr. Anuj Bansal, Kalika Steels. And let's call our session chairman, Mr. Paramjeet Singh, Additional Industrial Advisor, Ministry of Steel. Very good morning to the members of the Induction Furnaces Fraternity, the panelists present here, the dignitaries on the dais and off the dais. The session ahead will be a discussion on decarbonization and the road to net zero. Although these are the buzzwords nowadays, I believe it is important to explain them in simple terms for those who are not aware of them. Decarbonization is the act of reducing the carbon dioxide emissions from any process. Net zero, on the other hand, means the act of nullifying the emissions of carbon dioxide by capturing the gases present in the atmosphere. अपने धंधे में जैसा बोलते हैं कि आवक और जावक एक बराबर करना. So as we are all aware, one of the major reasons for climate change is emission of greenhouse gases that primarily consists of CO2 and other to achieve carbon emissions. Although steel is a necessary driver of economy for any developing stage economy, made by the Honorable, in fact, being chosen that to rolling operations, majority of us are doing direct rolling or hot charging as we call it, which again reduces dependence on coal, gas or furnace oil for reheating. Process is very clean. However, there is a lot. So let us start by welcoming Dr. P.R. Swaroop, who is the director, has worked extensively on green hydrogen. We are almost 50% based on the JPC numbers. And of course, the electric induction furnaces, which are mostly represented here, are close to around 900. But we heard in the morning that this might be more than 57, I think, as was being mentioned in the previous session. And if we really look at the energy consumption, again, of course, from induction furnaces purely, it is not as high as one would consider in terms of the total tons of oil equivalent. The sponge iron producers are almost around, I would say, 22 tons of oil equivalent, whereas rest of it is almost 75% of that is coming from the sponge iron. This is the roadmap which I briefly mentioned, I think, and the roadmap, the details are available on our website. But as was mentioned, I think the 5 key pillars for the steel industry to really meet this 2070 net zero goal have to be energy efficiency, increase scrap utilization to the extent possible, go in for renewable energy to the extent possible, promote RD&D, and then the policy and the regulatory framework for which we already have extremely good efforts being made by the Ministry of Steel and other government bodies.
On the energy efficiency, I think since you all, I have just put it on this slide of the work based on the work which we do with the steel sector. The best available technologies in terms of how one should be more on the use of operational practices, process scrap usage, ideal furnace loading, lids, adoption of energy efficient auxiliaries. I think these are the things which sometimes we don't really bother about it. Cooling water pumps, dust extraction fans, efficient motors, automation, and of course the new age induction furnaces, which many of these representatives are present in this conference. In terms of the scrap, one really knows, if we really see this last one, it's almost 85% reduction in terms of the emissions if we are using scrap as compared to the BFBF route. And on the RE, of course, I think the major areas, of course, is that if all of you can think of in a way how to really go in for more and more RE adoption, because if you're using electricity as the real route for your entire energy consumption, those who are purely on the induction furnace route, either it has to be the on-site or off-site captive RE generation, and it could be own investments. There are now many RESCO companies which are already very, very active. And of course, the open access system has been improved. But yes, there are challenges, issues at the state level, at the DISCOM level. We know about that. In different states have got different kinds of issues, whether it is in terms of the transmission charges, the wheeling charges, the cross-subsidy charge, the congestion. Those issues do exist, but I think that's perhaps the only way forward when we have to move towards a net zero pathway. Deep decarbonization is something which Mr. Paramjit Singh mentioned, and I think the earlier speaker also mentioned. I think the role of hydrogen will definitely play an important role. Globally, research is also happening on the molten oxide electrolysis, specifically in USA and other areas, but maybe that is something for the next, after 20 years or something. But definitely green hydrogen has to play an important role moving forward. This is the final thing which, based on the research which we have done, that ultimately by 2070, if you really look at it, the light blue one, which is there at the top, the last bar, if you see, that is the hydrogen-based DRI route, will definitely have to play an important role moving forward. We do have the announcements by the Government of India of almost 18,000 crore rupees program on the green hydrogen. I think the first set of bids have already come in. But those who are actually not directly into hydrogen production, of course, on the steel side, you really can't do much. But I think the industry which is on the iron making, that will have to make a major shift. The steel part has to remain on electricity itself. And then, of course, the other is the role of carbon capture and storage. Again, it is very early days, but I think it will have some role, definitely, given the fact that we have a really large BFBF. So finally, 4 or 5 key messages. I think hydrogen direct reduction is going to play an important role. Then coupled for iron making and coupled that with, of course, the electric. Move forward. So, हमारे लिए energy efficiency is quite important. This one? This. Okay. So we all understand what is the importance of the secondary steel sector. That's why we are here. We have been listening to all. Consider myself as part of you. We have DRI plants. We have arc furnace. So many secondary steel units are there. And best part present in each and every states in the country. So we all understand कि हमारा what are the challenges we have. Most of us are micro, small and medium enterprises, and we have those challenges which are with us for a long period of time. So we don't have much, we don't invest much time on research and development. We don't have any financial incentives. We don't have any skills to run those technologies we are talking about. So with this, we are moving forward. And if you see the subsectors of the secondary steel sector, if you talk about the DRI plant, we have the rotary kiln, which is the major energy guzzler. In case of arc furnace, it is the arc furnace. In induction furnace, it is the furnace itself. Whereas in case of a steel re-rolling mill, it is still the reheating furnace and the rolling mill. So I have converted all these energies into a common form, that is the megajoule per ton. And I've done this to show you where each one of you is placed and how you can move forward. When we talk about the net zero strategy that India has decided that
by 2070 it will become net zero. So it is very important for all of us, for all the secondary steel units, all the mini steel plants across the country to come together and act. Abhi se act karna bahut zaruri hai. There are many projects. I think my next speakers will be talking about those projects, those supporting hands which are there from the government, from the multilateral, bilaterals to support the this mini steel plants. So what is important here is deriving a pathway for net zero and decarbonization for the secondary steel sector. जहाँ पे भी हम बात करते हैं in the international platform, we talk about the entire iron and steel sector. But what is there for this smaller group, this mini steel plants? So if you can see this, there are three pathways. One is the BAU scenario, that is the current scenario which we are going through. If you want to achieve more, maybe more savings in terms of energy, you have to do something, and it is the moderate scenario. When you want to achieve more than 25% or even 30% energy saving, that is the ambitious scenario. I'll talk to you about how all of you, each industries can actually achieve that ambitious scenario. So if you talk about the steel re-rolling mill sector, स्टील रीरोलिंग मिल सेक्टर में आज से 10 साल पहले हम वो मैनुअल मिल्स चलाया करते थे, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में मैनुअल मिल्स हुआ करता था, वहां से मूव करते हुए वी आर इन द डायरेक्ट रोलिंग नाउ. As the moderator has said that most of the industries are having direct rolling. But what next? Let me tell you that there are many technologies which is beyond the direct rolling. And it talks about the automation and sensor-based automation of the rolling mill. Sensor se rolling mills kaise wo kare, how you can go for the most energy efficient drives in your rolling mill. How you can improvise the system, improvise the direct rolling system. Isme aap utilization kaise badhaye. So for that, there are many technologies available. Some of the industries are doing it. For others, it's an opportunity. Remember, you are, I think most of you are still in that current SEC level, and to reach that benchmark of 1790 megajoule per ton, that is for the standalone rolling mill, you need to do a lot many things. So please, Yeah, we are sure, running out of sure. Coming to the EIF sector also, we are talking about the power systems. Now there are IGBT-based power system, even 12 and 24 pulse power systems. We can discuss about this in maybe separately. Then we have the DRI plants, and in the DRI plants also we are talking about the preheating of the iron ore. So all this together will lead to the net zero roadmap, and this is how the steel sector, the mini steel plants can go. The first horizon from now to 2030 is energy efficiency, renewable energy. Second, from 2030 to 50, we'll talk about hydrogen, green hydrogen. And the third horizon, that is 20. Right. So let me recap quickly UNDP's work in the secondary steel. We are supplying basically, you can. This NIST is created for the benefit of the secondary steel sector, and we for designated consumers, then we conduct training programs